ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। ये आपकी क्लास नंबर है RPC 76। इसमें हम डिक्टेशन नंबर 126 और 127 इसकी आपको प्रैक्टिस पहले से करनी है। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। अब जितनी भी जो आउटलाइंस है पॉकेट बुक के अंदर, अब हम वो पॉकेट बुक की आउटलाइन सेम रखेंगे आप। अब यहाँ से आउटलाइंस जो है जिसमें एक वॉवल का चैप्टर उसको छुड़वा देंगे, नहीं तो जो भी आउटलाइन है अब सेम रहेंगी। तो सेम रहने के कारण उसको यहाँ पर ना लिखवा करके सीधा वहीं से आपको देखना है और उसको आउटलाइन को बनाना है। कल जैसे जो अगला टेस्ट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कल जो टेस्ट लिया जाएगा उसकी एक्सरसाइज रहेगी 128 और 129, इसकी डिक्टेशन इकट्ठी बोली जाएगी, और 130 और 131 ये 4 डिक्टेशन कल बोली जाएंगी। तो 2-2 करके बोली जाएंगी, तो पहले से उसकी प्रैक्टिस कर लेना है। अब मैं बोलने जा रहा हूँ 126 और 127। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। The chairman said an advertisement had been inserted in the local press inviting the residents to give substantial subscriptions to a central fund, and the amount subscribed being out of all proportion to expectations. There was now no fear of a deficiency, and there would be no difficulty in discharging all initial expenses. Among the observations made by the speakers, those of Dr. Rawson were the most practicable, and we hope they will have a wide publication. He gave a description of a scheme somewhat different from ours and led the audience to follow its applicability to the present case. Of course, Mr. Smith, who is very far from being deficient in eloquence and who is a practiced speaker, had some wild statements to make and spoke of the evils of the disproportion in which the enjoyments of life are distributed. His speeches are very unsubstantial, but as a performer of the ludicrous, it would be difficult to find his equal either in this country or in any republic. When the next edition of the local paper is published, I will forward you a copy, and you will be able to realize how unflattering he is in his remarks about what he calls the disproportionate distribution of wealth. The chairman, in the course of his speech, said that to seek the preservation of the concern when the profits were so unsubstantial and so disproportionate to the amount invested, and when the price of the stock was so depreciated, was absurd, and it was inadvisable to carry on the company. The advertisements in the paper are out of all proportion to the news, which is very deficient, and we marvel at the prosperity of the publication and the confidence of the publishers. It has often subscribed substantial amounts to public funds, opened its columns for national subscriptions, and given distinguished services to the cause of charity. The performer who performed at the theatre is a Russian, and his artistic
performance of the play brought out all the peculiarities of the slave race, although there was a disproportion in his acting which would render a long engagement impracticable. इसमें एक जैसे साइन था, एक साइन था स्पीकर, स्पीकर का साइन चेंज कर लेंगे, बस स्पीकर को इस तरह बनाना है, स्पीकर का साइन चेंज करना है, बाकी सब सही है, ठीक है। और इसको पहले अच्छे से लिखी गई आशीष, इसकी प्रैक्टिस करनी है 10 बार, पहले इसकी प्रैक्टिस कर ले 10 बार, लिखना है, पढ़ना है, टाइप करना है, लिखना है, पढ़ना है, टाइप करना है। जो 10वीं बार आप लिखते हो वो जैसे मतलब भी मेरे को व्हाट्सएप किया करो ऑनलाइन वाले बच्चे, और जो क्या कहते हैं जो मेरे पास यहाँ पढ़ते हो प्रिंट निकाल के मेरे साइन लिया करो, उस पर साइन होने ज़रूरी है। इस क्लास में इतना ही बच्चों, नमस्कार बच्चों।